I'm Priyanka and I'm back again. My chapter of question answer the power of prayer. Take the correct alternatives. Kalam felt that he had a very secure childhood, insecure childhood, peaceful childhood, या फिर disgusted childhood. Option number A, secure childhood. Kalam house was made up of brick, limestone and brick, stone and brick, red stone and brick. Option number B, limestone and brick. Prayers make a dash of the spirit between people possible. Communion, translation, recurrence, communication. Option number A, communion. Answer the following in 30 to 40 words. What used to happen when the writer father come out of the mosque after prayer? क्या होता था जब राइटर के पापा मॉस्क से बाहर आते थे प्रेयर के बाद? People of different religion would be sitting outside. बहुत सारे लोग अलग अलग रिलीजन के बाहर बैठे रहते थे वेटिंग फॉर राइटर फादर राइटर के पापा के लिए वेट करते थे. मेनी ऑफ देम ऑफर्ड बॉल्स ऑफ वाटर टू हिम. बहुत सारे लोग उनको पानी का बॉल भी ऑफर करते थे. ही वुड डिप हिज फिंगर इन देम एंड से प्रेयर. वो उसमें अपना फिंगर डिप करके प्रेयर्स बोलते थे. दिस वाटर वॉज देन कैरिड होम फॉर इनवैलिड. और फिर ये वाटर घर ले जाया जाता था इनवैलिड्स के लिए. What does Kalam suggested not to feel small or helpless? कलाम ऐसा क्यों बोलता है कि कभी भी स्मॉल या हेल्पलेस फील नहीं करना चाहिए? कलाम suggested not to feel small or helpless because we all are born in divine fire in us. क्योंकि हम सब में एक डिवाइन फायर होता है. Our effort should be to give wings to this fire. हमारा एफर्ट होना चाहिए कि हम कैसे इनको और ग्रो करें एंड फिल द वर्ल्ड विद द ग्लो ऑफ अ गुडनेस. और कैसे हम वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ गुडनेस भरें. Why according to Kalam has God created an individual creature? क्यों कलाम के अकॉर्डिंग गॉड ने एक इंडिविजुअल क्रिएचर बनाया है? According to Kalam, God has created an individual creator on this beautiful planet to fulfill particular role, ताकि वो हर एक इंसान एक पर्टिकुलर रोल प्ले कर सके. That's why we all are born with a divine fire in us. इसीलिए हम सबका बॉर्न हुआ है खुद में एक डिवाइन फायर से. हाउ डज प्रेयर अफेक्ट एन इंडिविजुअल? कैसे प्रेयर अफेक्ट करता है इंडिविजुअली? प्रेयर मेक पॉसिबल अ कम्युनियन ऑफ स्पिरिट बिटवीन पीपल. प्रेयर पॉसिबल कम्युनियन करता है स्पिरिट्स में, लोगों के बीच में. व्हेन वी प्रे वी ट्रांसेंड आवर बॉडी एंड बिकेम अ पार्ट ऑफ कॉस्मोस. जब हम प्रे करते हैं तो हमारी जो बॉडी रहती है वो कॉस्मोस का एक पार्ट बन जाती है. विच नोज नो डिविजन ऑफ वेल्थ एज कास्ट और क्रीड. जिसमें कोई डिविजन नहीं होता है वेल्थ एज कास्ट या क्रीड का. What did Kalam meal in childhood normally consist of? कलाम जब छोटे में खाना खाता था तो उसका मील में क्या कंसिस्ट होता था? कलाम meal in his childhood normally include rice, aromatic sambar and a variety of sharp homemade pickles and a dollop of fresh coconut chutney. What according to the author is good purpose in creating each individual being? ऑथर के अकॉर्डिंग गॉड का क्या पर्पस होता है इंडिविजुअल क्रिएट करने में? अकॉर्डिंग टू ऑथर ईच इंडिविजुअल क्रिएचर ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लैनेट इज क्रिएटेड बाय गॉड. हर एक क्रिएचर क्रिएट किया जाता है गॉड से ताकि वो फिलफिल करे एक पर्टिकुलर रोल अर्थ में. Write the following question in 60 to 80 words. Describe the house in which Kalam lived during his childhood. उन हाउस के बारे में बताओ जहाँ पे कलाम अपने बचपन में रहता था. The house in which Kalam lived during his childhood was his ancestral house. मतलब उनके पुरखों का घर था. इट वॉज बिल्ड इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी. ये बनाया गया था 19th सेंचुरी में. इट वॉज फेयरली पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक. वो घर जो था वो एक पक्का हाउस था, लाइमस्टोन और ब्रिक से बनाया गया था. इट वॉज ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम. वो एक मॉस्क्यू स्ट्रीट में था रामेश्वरम में. द फेमस शिवा टेम्पल वॉज अबाउट 10 minutes वॉक फ्रॉम हिज हाउस. उसके घर से सिर्फ 10 मिनट दूर ही एक बहुत ही ज़्यादा फेमस शिवा टेम्पल था. द लोकेलिटी वॉज प्रीडोमिनेटली मुस्लिम. और वो जो लोकेलिटी था वो पूरा मुस्लिम था. What did Kalam learn from his father about the power of prayer? कलाम ने क्या सीखा अपने पापा से प्रेयर्स के पावर के बारे में? About the power of prayer, Kalam learned from his father that there was nothing mysterious about prayer. उन्होंने ये सीखा कि प्रेयर में कुछ भी मिस्टीरियस नहीं है. Rather, prayer made possible a communion of spirit between people. प्रेयर से हमारे पॉसिबल कम्युनियन होता है स्पिरिट का लोगों के बीच में. When we pray, we transcend our body and became a part of cosmos. जब हम प्रे करते हैं तो हमारी बॉडी ट्रांसेंड होती है और एक पार्ट बन जाता है कॉस्मोस का. विच नोज नो डिविजन. जिसमें कोई डिविजन नहीं होता है वेल्थ एज कास्ट और क्रीड का.
Why does the writer regard his father to have been a suitor? The writer regards to his father to have been a suitary because he avoided all essential comfort and luxury, क्योंकि उन्होंने avoid कर दिया था सारा comfort और luxury, मतलब अच्छे से life जीना. However, all the necessity were provided to the family in term of good medicine और clothes, और अपना सारा necessity अपने family को provide किया जाता था in term of फूड मेडिसिन और क्लोथ्स की फॉर्म में. हिज फादर लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ. अब उसके पापा बहुत सिंपल लाइफ रहते थे बट फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइम एंड स्टोन, और उनका घर जो था वो एक पक्का हाउस बना हुआ था लाइमस्टोन और ब्रिक्स का. Why does Kalam say that one should not be afraid of difficulty, suffering, and problem? Kalam says that one should not be afraid of difficulty, suffering, and problem because he learned from his father that when trouble comes, one should try to understand the relevance of one suffering. क्योंकि उनका कहना था, उनके पापा का कहना था कि जब भी ट्रबल आता है तो हमें हमेशा समझना चाहिए रेलिवेंस एक के सफरिंग का. आफ्टर adverse and adversity always present opportunity for introspection. Every human being is a specific element within the whole of manifest divine being. Hence one should not be afraid of anything. इसीलिए किसी को भी किसी भी चीज़ के लिए डरना नहीं चाहिए. State whether the statement is true or false. आपको बताना स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स. APJ Abdul Kalam was born in Shimla. It is false. The highest priest of Rameshwaram temple, Pakshi Lakshman Shastri, was a close friend of Kalam's friend. True. APJ Abdul Kalam is known as a missile man of India. True. The Wing of Fire is an autobiographical work of APJ Abdul Kalam. True. Find out one word of the following. Severe or strict in appearance or manner. It's assertory. Austera. Family line is lineage. Lineage. The shapeless mass of food. Dollop. The willingness to give someone money, gift, timely, free, generosity. A building in which Muslim worship, mosque, done in a friendly way without arguing, amicably. The situation of being greater in number, far more. Change the word into adverb. Okay, आपको वर्ड को एडवर्ब में कन्वर्ट करना है. वाइड का क्या होगा? वाइडली. WIDELY. फेयर का फेयरली. FAIRLY. फेयरली. नॉर्मल का NORMALLY. नॉर्मली. प्रिडोमिनेंट का प्रिडोमिनेंटली. PREDOMINANTLY. प्रिडोमिनेंटली. विविड का विविडली. VIVIDLY. विविडली. रियल का रियली. REALLY. रियली. इंडिविजुअल का इंडिविजुअली. INDIVIDUALLY. इंडिविजुअली. Now, next is okay. Composition. These are few activities. So we'll go through few activities. Those are okay. The word invalid used in lesson can be used as an adjective, noun या verb. ठीक है. People with invalid papers are deposited to another country. Her parents had treated her as an invalid. Noun. He was invalidated out of army in 1975. ये क्या हो गया हमारा? Verb. Find out 5 words from the dictionary which express different meanings and used in different categories. पैसे 5 वर्ड जिसके अलग अलग मीनिंग हो और उसके अलग अलग कैटेगरी हो, जैसे कि नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब या फिर कुछ अदर्स. ठीक है. बेल्ट, ये वर्ब वर्ब नाउन. वर्ब हो जाएगा हमारा आघात करना. नाउन हो जाएगा पेटी या बेल्ट. उसका फ्रेजल वर्ब होगा हमारे ऊंचे स्वरों में गाना या बजाना. क्लोज मतलब इसका वर्ब हुआ बंद करना. नाउन हुआ समाप्ति और एडजेक्टिव हुआ निकट या पास. नीड इसका वर्ब हुआ किसी वस्तु की आवश्यकता होना. मॉडल इसका मॉडल वर्ब के रूप में है. नाउन मीन्स अनिवार्य. ओवर प्रपोजिशन हुआ किसी वस्तु के सीधे ऊपर न छूते हुए. एडजेक्टिव समाप्त. नाउन क्रिकेट में ओवर. नेक्स्ट वर्ब किसी को जाल में फंसाना. एडजेक्टिव शेष. नाउन जाल. नाउ
अब आगे है हमारा ओके, divide your class groups and discuss about APJ Abdul Kalam as a missile man. APJ Abdul Kalam, a missile man. After graduating, APJ Abdul Kalam joined Defense and Research and Development Organization (DRDO). He focused on research in defense and space arena as a scientist. In 1969, he was shifted to Indian Space Research Organization (ISRO). There, he got the government approval to expand the program. Within 20 years, Dr. Kalam was successful to develop the satellite launch vehicle and SLV-3 project. In 1970, he also directed two projects which developed the ballistic missile from the technology of SLV program. For this, he was given a secret fund, and then the PM he had developed many missiles including Agni and Prithvi. In this way, he became the missile man of India. Composition. Kalam considered youth the architect of India. Have you ever heard Kalam's speech on the role of youth in national building? In the light of any of Kalam's speech, you may read organize a discussion debate related to importance of youth in making a nation. The following lines can be discussed. Have a goal and work hard to achieve that goal. Small aim is a crime. मतलब एक उद्देश्य मतलब हैव अ गोल एंड वर्क हार्ड टू अचीव दैट गोल. अपना एक गोल बनाओ, ठीक है. और मतलब इस पैरा से कुछ लाइंस यही है कि अपना एक गोल बनाओ और उसको उस गोल को अचीव करो. स्मॉल एम इज़ अ क्राइम. वर्क विथ इंटीग्रिटी एंड सक्सेस विथ इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी से काम करो तो तुम सक्सेस भी मिलेगा इंटीग्रिटी से. ट्राई टू सेव बेटर try to save or better someone's life without any discrimination of caste, creed, language, religion or state. अपने आप मतलब सेव करने की कोशिश करो या फिर बेटर करने की कोशिश करो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज या रिलीजन या स्टेट में. ऑलवेज रिमेंबर द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम. हमेशा टाइम की कीमत समझो. लेट नॉट विंग डेज बी स्पेंट इन वेन. ऑलवेज वर्क फॉर क्लीन planet earth and clean energy. हमेशा clean planet earth और clean energy के लिए काम करो. Or Kalam believed in work of worship. He therefore told the nation not to observe a holiday on his death. The genuine tribute to him, he said, would be to work one day, etc. extra. मतलब कलाम बिलीव करते थे कि काम ही पूजा है. उनका कहना था कि मेरे मरने पे एक दिन की छुट्टी मत मनाना. इवन मेरे ट्रिब्यूट में तुम एक दिन ज़्यादा काम करना. In the light of Maxim and Kalim belief in list ways which enables you to execute the saying, your list must be as long as possible. Now, some of the ways can be, कुछ ways कैसे होते हैं. I never leave any work for tomorrow and tomorrow never come. कल के लिए मैं कोई काम नहीं छोड़ता हूँ कि कल कभी नहीं आता. Sometimes we idly awake and think that we will do it later, but by doing so we are only killing time. हम कभी कभी सोचते हैं कि हम ये काम कल कर लेंगे, लेकिन ऐसा करने से क्या होता है कि हम वो टाइम सिर्फ काटते हैं, क्योंकि वो समय कभी रिटर्न नहीं आ सकता है. वी शुड नॉट वेस्ट टाइम इन आइडली वे. तो हमें कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. लेजीनेस इज़ अ चीफ एनिमी ऑफ वर्क. लेजीनेस बहुत ज़्यादा एक एनिमी है काम का. इट पुट्स ऑन द बैक बेंच. वी शुड वर्क विदाउट केयरिंग फॉर रिजल्ट. बिना रिजल्ट का सोचे हमें हमेशा काम करते रहना चाहिए. How did Kalam perform prayer in childhood? Kalam father would take him to the mosque in their locality for evening prayers. कलाम के पापा जो थे वो उसे मॉस्क्यू ले जाते थे evening prayers के लिए. He had not the faintest idea of meaning of Arabic prayers chanted, but he totally convinced that they reached God. What does Kalam say in praise of his father? In praise of his father, Kalam say that he was an astute who used to avoid all इनएसेंशियल कंफर्ट. वो अपने पापा के लिए बोलता है कि वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी सारी लग्जरी, सारा कंफर्ट त्याग दिया था. एंड ही कुड कन्वे कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट इन वेरी सिंपल एंड डाउन टू अर्थ तमिल. और वो बहुत ही डाउन टू अर्थ रहते थे.
बहुत ही सिंपल लाइफ रहते थे. वी शुड नॉट गेट अफ्रेड ऑफ डिफिकल्टी सफरिंग एंड प्रॉब्लम्स. वाई? We should not be afraid of difficult suffering and problem because when trouble comes we should try to understand the relevance of a suffering. जब trouble होता है तो हमें उसका suffering समझना चाहिए. Adversity always presents opportunity for introspection. What does Kalam say about his achievement? About his achievement, Kalam say that whatever he has achieved in his life is through God help. वो कुछ भी अचीव किया अपने लाइफ में वो भगवान की मदद से ही हुआ है. An expression of his will. He showed his great to him through some outstanding teachers and colleagues. Long answers. What message has Kalam conveyed through this lesson? Through this lesson, Kalam has convinced his message to several million mass of India that they should never fall, never feel small or helpless. He says that we all are born with divine power in us. Our efforts should be give wings to fire and fill the world with glow of his goodness. He has also conveyed that we should not be afraid of difficulties and problems. Passage. Read the passage and answer. Passage 1. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the Eastwhile, Madras state. My father, Janulad, Januladdin, had neither much formal education nor much wealth. Despite this disadvantages, he possessed great innate wisdom and true generosity of spirit. He had an ideal helpmate in my mother, uh, Ashiyama. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsider ate with us than all the members of our own family put together. My parents were widely regarded as an ideal couple. My mother lineage was the more distinguished, one of her forebears having been bestowed the title of Bahadur by the British. I was one of my children, a short boy with rather undisgusted looks, born to tall and handsome parents. We lived in our ancestral house, which was built in the middle of 19th century. Where was the writer born? लेखक का जन्म कहाँ हुआ था, मतलब उसका वो कहाँ born? Writer was born in family middle class Tamil family. Writer middle class Tamil family में born हुआ था. What initiate quality of Kalam father process? Kalam father possessed great innate wisdom and true generosity of spirit. Now, who was the writer mother? Writer की मम्मी कौन थी? The writer mother was Ashiyama. Now, what does Kalam say about his parents? Kalam अपने parents के बारे में क्या बोलता है? Kalam say that his parents were widely regarded as an ideal couple. वो एक ideal couple थे. What does Kalam say about his mother lineage? वो अपनी मम्मी के बारे में क्या बोलता है? Kalam says that his mother lineage was more distinguished. उसकी मम्मा का lineage बहुत distinguished था. Who was bestowed the title of Bahadur and by whom? बहादुर का title किसको मिला था और किससे? Kalam says one of his forebears of Kalam mother was bestowed the title of Bahadur by Britishers. Now, number 7. Why does Kalam call his father as an estuary man? क्यों वो अपने पापा को estuary man बोलता था? Kalam called his father an estuary man because he used to avoid all essential comfort and luxuries. क्योंकि उसके पापा ने अपनी सारी सुख सुविधाएं आवश्यकताएं की चीज़ें छोड़ दी थी और एकदम सिंपल लाइफ बिता रहे थे. Pick from the passage the word which is opposite to miserliness. इसका opposite होता है हमारा simple. Miserliness का opposite simple. Find from the passage the word which means commanding great respect. Commanding great respect का मतलब हुआ very good या फिर clearly noticeable. Passage 2. I normally ate with my mother sitting on the floor on the kitchen. She would place a banyan leaf before me on which she she then laid it rice and aromatic sambar, a variety of sharp homemade pickles, and dollop of a fresh coconut chutney. The famous Shiva temple, which was at Rameshwaram, so sacred of pilgrims, was about a 10-minute walk from our house. And ये paragraph जाता है. My father always smiled and asked them to thank Allah the benevolent and merciful. यहाँ तक. First question based on this paragraph. What are Kalam way of eating?
कलाम का क्या वे था ईट करने का? कलाम नॉर्मली ईट विद हिज मदर। कलाम अपनी मम्मी के साथ खाना खाता था, सिटिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द किचन, किचन के ज़मीन पे फ्लोर पे बैठ के। वॉट वॉज कलाम यूजल मील? कलाम का यूजल खाना क्या था? कलाम यूजल मील वॉज राइस, एरोमेटिक सांबर, शार्प homemade pickles and fresh coconut chutney. Now, what made Rameshwaram so sacred to pilgrim? क्या रामेश्वरम को इतना सीक्रेट बनाता है पिलग्रिम्स के लिए? द फेमस शिवा टेम्पल, वहाँ का जो फेमस शिवा टेम्पल है वो। नंबर 4, हाउ वॉज कलाम लोकेलिटी? कलाम की लोकेलिटी कैसी थी? कलाम लोकेलिटी वॉज प्रोडामिनेटली मुस्लिम, मतलब वो पूरी की पूरी मुस्लिम बस्ती थी। डिड कलाम अंडरस्टैंड द प्रेयर इन हिज चाइल्डहुड? क्या कलाम चाइल्डहुड में प्रेयर समझता था? नो, कलाम डिड नॉट अंडरस्टैंड द फेंटेस्ट आइडिया ऑफ द मीनिंग ऑफ अराबिक प्रेयर इन हिज चाइल्डहुड। नहीं, उसको नहीं समझ में आता था। नाउ, वॉट डिड कलाम फादर डू टू द बाउल ऑफ वाटर? कलाम के पापा बाउल ऑफ वाटर से क्या करते थे? कलाम फादर डिप्ड हिज फिंगर टिप्स इन द बाउल ऑफ वाटर इंस्टेड ऑफ प्रेयर। कलाम के पापा जो थे वो पानी में अपने फिंगर डिप करते थे और प्रेयर्स बोलते थे। नाउ, वट डिड पीपल डू विथ वाटर? पीपल उस पानी से क्या करते थे? पीपल कैरी द वाटर टू द होम्स फॉर इनवैलिड। वो पानी लोग अपने घर ले जाते थे इनवैलिड्स के लिए। पिक फ्रॉम द वर्ड पिक फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच इज ऑपोजिट टू क्रूअल। क्रूअल का ऑपोजिट क्या होता है? मर्सीफुल। नाउ, मेक द प्लूरल, आपको प्लूरल बनाना है बनाना का। बनाना का प्लूरल होता है बनानास, BANANAS, बनानास। होम का प्लूरल होता है, होम का प्लूरल है हमारे यहाँ पे homes, HOMES, homes. Passage 3. My father could convey complex spiritual concept in very simple, down to earth Tamil. He once told me in his own time, in his own place, in what he really is, and what is the stage he has reached, good or bad. Every human being is specific elements. और ये पैरा है हमारा यहाँ तक. Our effort should be to give wings to this fire and fill the world with glory of its goodness. What does Kamal say about his father's understanding of Tamil? Kamal say that his father could convey complex spiritual concept in very simple down to earth Tamil. वो कहते थे कि उसके पापा जो थे वो कन्वे करते थे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट को भी बहुत ज़्यादा सिंपल डाउन टू अर्थ तमिल भाषा में. What do you know about the existence of human being? आप क्या जानते हो existence of human being के बारे में? Every human being is a specific element within the whole of its manifest divine being. What should we do when trouble comes? हमें क्या करना चाहिए जब trouble आता है? When trouble comes, we should try to understand the relevance of a suffering. उसका main cause क्या है वो हमें समझना चाहिए. What is the positive aspect of the adversity? क्या positive aspect होता है adversity का? The positive aspect of the adversity is that it's always present opportunities for interception. ये हमेशा present होता है opportunity interception के लिए. What is God purpose of creating each individual? क्या purpose होता है God का each individual create करने में? God purpose of creating each individual is to fulfill a particular role. क्यों fulfill करता है एक particular role. Number 6. How had Kalam achieved success in his life? कलाम ने कैसे success achieve किया अपने life में? कलाम has achieved success in his life through the help of God. How had God showed his grace of Kalam? कैसे God ने grace दिखाया कलाम पे? God showed his grace on Kalam through some outstanding teachers and colleagues. How are we all born? हम सब कैसे born होते? We all are born with the divine fire in us. Question number 9. Pick from the passage of the world which is opposite to simple. Simple का opposite क्या है? Complex. Find the word in the passage which means very good या फिर clearly noticeable. इसका मतलब होता है distinguish. Thank you.